Hello. Good afternoon, everyone. On behalf of Institute for Plasma Research, I welcome you all to the concluding session of the week-long celebration of National Science Day. As we all know, National Science Day is celebrated since 1987 each year on 20th February to celebrate the discovery of the Raman effect by our own physicist Sir C.V. Raman in the year 1928. IPR, however, celebrates it a bit early so that the students can take part in the Science Day celebrations of other institutions also. Since many years, IPR is celebrating the National Science Day on a grand scale. Every year in the month of February, 2 days are dedicated for the celebration of the Science Day. Since 2013, when the National Science Day was revived after a hiatus of many years, we have been receiving an overwhelming response with the participation of over 100 schools across Gujarat and over 600 students and teachers who participate with great enthusiasm in several competitions organized under National Science Day. These competitions are like science models, quiz, elocution, skit, poster, and essay. IPR also hosts an open house which welcomes about 3,000 visitors during the 2 days of the National Science Day celebrations. The promise of popularizing science did not stop even during the pandemic. Since last 2 years, we have taken the National Science Day celebration to a virtual mode where the competitions were conducted online. Thanks to the aid of science and technology, we did not have to stop our activities even during the pandemic times. Today, we are here for the concluding session of this year's National Science Day celebration. On this occasion, I would request the Director IPR, Dr. Shashank Chaturvedi, to address the audience with the words of encouragement for the students as well as teachers. I request you, sir. Namaskar. I'll speak in both English and Hindi. Now, you all know that India is rising rapidly as a global power. You see evidence of that whenever you read the newspapers. आप न्यूज़पेपर्स देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप देखते हैं कि इंडिया की इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है. तो करीब 300 साल के बाद हम लोग फिर से विश्व में अपना फिर से जो हमारा सही स्थान है उसको पा रहे हैं. A rightful place in the world. एक काफ़ी मशहूर किताब है राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, जिसने देखा है कि हिस्ट्री में अलग अलग देश अलग अलग टाइम पे पावरफुल होते हैं और फिर धीमे धीमे उनका डिके होता है. एक टाइम पे 1400 1500 के आसपास 1600 के आसपास पुर्तगाल और स्पेन इस तरह इम्पोर्टेंट थे. उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड का टाइम आया, वो काफ़ी टाइम तक चला. फिर यूएस और रशिया का टाइम चला, और अब लोग कहते हैं कि इंडिया और चाइना का टाइम आ गया है. तो शायद अगले 50 या 100 साल भारत और चाइना वो वर्ल्ड को लीड करेंगे. तो हम लोग बड़े प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग जो भारतीय लोग हैं, कि हम लोग ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जब भारत इतना पावरफुल होता जा रहा है. अपने सामने बढ़ते हुए देखना से ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं होती. कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली 2030 या 2035 तक इंडिया माइट बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. और जब ये इकोनॉमिक पावर आएगी तो साथ में पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर भी साथ में आनी ही पड़ती है. हर देश की हिस्ट्री यही है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन ईच ऑफ अस कंट्रीब्यूट. हम लोग क्या कर सकते हैं? अक्सर ही आपने अपने साथियों को या और लोगों को सुना होगा या टीवी पे लोगों को सुना होगा, लोग कहते हैं कि अपने आप कुछ नहीं हो सकता, भारत में कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम डजंट परमिट यू टू वर्क, लोग कर नहीं सकते. कोई भी अगर भारत में नई चीज़ शुरू करने की कोशिश करता है तो दिक्कतें बहुत आती हैं, सबको आती हैं. लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स उनकी हैं जैसे एक छोटे बच्चे की प्रॉब्लम्स होती हैं. छोटा बच्चा आता है, उसको शुरू में चीज़ें करने में दिक्कत होती है, बाद में मुश्किल धीमे धीमे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है. तो हर दिन ग्रोथ होती है, इम्प्रूवमेंट होता है. तो वही चीज़ इंडिया की है. थिंग्स विल गेट बेटर, दे आर गेटिंग बेटर डे बाय डे एंड दे विल कंटिन्यू टू गेट बेटर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए क्या गाइडेंस है? यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा नहीं कि लोग साथ में मिलकर ही कोई काम करते हैं. इंडिविजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बड़े फेमस अपने एक जज थे ब्रिटिश पीरियड में, सर विलियम जोन्स. उनका कोट मैं आपको सुनाता हूँ. द वर्ल्ड इज ओनली बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द ट्रू वेल्थ ऑफ अ नेशन लाइज इन द नंबर ऑफ सुपीरियर मैन इट हार्बर्स. किसी भी देश की जो असली ताकत होती है उसमें सुपीरियर लोग कौन है, उन पे डिपेंड करता है.
उनके पोजेशंस पे डिपेंड नहीं करता, उन लोगों पे डिपेंड करता है. Geniuses are ferments, and when they come together, as they have done in certain lands and at certain times, the result is a general awakening. जब geniuses, जब बहुत talented लोग एक टाइम पे एक देश में आ जाते हैं, तभी उस देश का राइज होता है. इंडिया अभी ऐसे ही फेज से निकल रहा है. आप सब तरफ देखेंगे, गवर्नमेंट में देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे, सब जगह, सोशल सेक्टर में देखेंगे, बहुत ही टैलेंटेड और एनर्जेटिक लोग आपको सब तरफ दिखाई देंगे. आप अखबार पढ़िए, आप टीवी देखिए, यू विल सी पीपल लाइक दैट ऑल ओवर द प्लेस. एंड ऑल ऑफ देम हैव कम टुगेदर इन द सेम टाइम. पिछले 20, 25, 30 साल में ऐसा होता चला जा रहा है. और हो सकता है आप में से कई लोग उसी कैटेगरी में हो, वो स्पेशली टैलेंटेड, स्पेशली एनर्जेटिक लोग जो कि देश को आगे बढ़ाएंगे. अब द क्वेश्चन इज, साइंस डे के इसमें साइंस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखें, दैट इज बीइंग प्रोग्रेसिवली ड्रिवन बाय न्यू टेक्नोलॉजी. सब तरफ टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है. उससे ज़्यादा आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, ज़्यादा देशों में टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है. वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है. और साइंटिस्ट जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है. कैसे? एक तो है, हम लोग इंडस्ट्रियल पावर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज निकालें, नया सॉफ्टवेयर निकालें, तो उससे इकोनॉमिक माइट बढ़ेगी देश की. और दूसरा है मिलिट्री माइट का. तो ये दो चीज़ें हैं जो डिक्टेट करती है कौन सा कंट्री सुपर पावर है, मिलिट्री माइट एंड इकोनॉमिक माइट. कभी कभी आपने सुना होगा, कुछ लोग स्टेटमेंट्स देते हैं कि आजकल जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स, मेनी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट. वी टुक अ सर्टेन पाथ, कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप की, उनके मारे नुकसान हो रहा है. लेकिन ये बहुत सारे डेवलपमेंट चाहिए थे ह्यूमन काइंड को डेवलप करने के लिए, पूरी दुनिया में हम लोग को फैलने के लिए ज़रूरत थी उसकी, इसलिए किया गया. एक बहुत फेमस ब्रिटिश इंडियन साइंटिस्ट थे, JBS हेल्डेन, शायद आपने उनका नाम सुना होगा. उन्होंने कहा था कि द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजी हैव टू बी सॉल्व्ड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी. हमारे पास अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है. जैसे लोग पहले जंगल में रहते थे, उस सिंपल लाइफ में जाना पॉसिबल ही नहीं रहा. देयर आर टू मेनी ह्यूमंस अराउंड नाउ. You cannot go and live in the forest. You cannot go and live in caves. There are not enough forests. There aren't enough caves. So we cannot go back to a very simple life. जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के टेक्नोलॉजी से ही सोल्यूशन करना पड़ेगा. और इसमें, इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ अक्सर आती है, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च का. इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में, जो यूरोप है, US है, जापान है, इन सब में, इनमें बेसिक और अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च टू अंडरस्टैंड ये नेचर कैसे बिहेव करता है, एंड उसका एप्लीकेशन टू डेवलप टेक्नोलॉजी, ये सब साथ साथ चलते रहे. फ्रॉम द बिगिनिंग, पीपल हु वर स्टडिंग न्यू फिनोमेना वो ऑल्सो इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर्स. वो नई टेक्नोलॉजी भी निकालते रहे, वो चीज़ें, प्रोडक्ट्स बनाते रहे. इंडिया में हम लोग का बहुत ही वाइब्रेंट बेस रहा है बेसिक रिसर्च का, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. लेकिन समहाउ वो बहुत ही ब्रिलियंट लोग रहे हैं बेसिक रिसर्च में शुरू से. लेकिन जो इनोवेटर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जो कमर्शलाइज करते हैं, उनसे कनेक्शन नहीं था. तो हम लोग को बहुत सारी बहुत ज़रूरत है कि बेसिक रिसर्च जो लोग कर रहे हैं, जो ब्रिलियंट लोग हैं, वो, और जो इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मिल के काम करें. तो बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च शुड गो हैंड इन हैंड. तो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग ऑल ऑफ यू विल सी, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली विल सी इंडिया बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर. आपके अगले 10-20 साल में आप खुद ही देख लेंगे. ट्राई टू एंश्योर दैट यू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, so that 30 years from today or 40 years from today, you'll be leading the country. You should be able to look back and say, I made India the power that it is today. Thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring words. I'm sure the young minds will have been ignited to carry forward the light of science. Next, I request the R&D Dean IPR, Dr. P.K. Atre, to address us on this occasion. नमस्कार. एक्चुअली IPR एवरी ईयर साइंस डे करता है और इस बार भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया. मैं यूट्यूब पे बीच बीच में देखता था, काफ़ी कंपटीशंस वगैरह, जैसे लाइक क्विज, एलोक्वेंस एंड आई थिंक पोस्टर्स एंड दिस मॉडल्स आल्सो हैज बीन डन. एंड काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया. आई थिंक मोर देन 100 स्कूल हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस बार भी काफ़ी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने बहुत मेहनत की. तो ये सब जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरी आशा है कि आप लोग जो है फ्यूचर में साइंस में अच्छा काम करेंगे और एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, कंट्री को की प्रोग्रेस में सहायता
सहायता देंगे कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। और आप ही लोगों में से कोई ना कोई विक्रम साराभाई या कोई भाभा जैसा साइंटिस्ट निकलेगा, आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट निकलेगा, जो इंडिया को एक बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ लोगों ने प्राइज भी जीते होंगे जो अनाउंस करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। सो धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, sir, for the wonderful words. The students will surely follow the path that you have enlightened. We are very happy to have Dr. Mukherjee, the Dean Administration IPR, with us today. I now request Dr. Mukherjee to share his feelings as a part of National Science Day celebrations. नमस्कार, मैं डॉक्टर एस मुखर्जी, डीन एडमिनिस्ट्रेशन आईपीआर का। मेरे तरफ से सबसे बड़ी बात है कि जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए वो सबको मेरे तरफ से मीन्स हार्दिक बधाई है कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेदर वन और नॉट। एंड सेकेंडली जो लोग मतलब उनको भी मेरे तरफ से मीन्स हार्टी कंग्रेचुलेशंस। As most of the participants are students over here, I will share something with you which has actually benefited me personally. जब मैं स्कूल में था तो मेरे एक टीचर मुझे पूछते थे कि जैसे कि हर एक चैप्टर के पीछे ना कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ रहते थे, उसका तो आंसर हम लोगों को देना ही था स्टूडेंट। बट वो साथ में ये भी पूछते थे कि तुम एक काम करो, अगर 10 क्वेश्चन है, यू राइट डाउन द 11th क्वेश्चन, नॉट द आंसर। Frame out of the same chapter the 11th question, and I found that framing the 11th question was very difficult. मतलब ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जितने भी चैप्टर में लिखा है वो तो क्वेश्चन है, उसके लिए चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ता था। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं मीन्स आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इसको थोड़ा सोचिए इसके बारे में, दैट कैन यू आस्क द राइट क्वेश्चन। इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चन देयर इज अ चांस यू विल आल्सो फाइंड द राइट आंसर। Thank you very much for participating, and thank you for all the teachers as well as specifically the outreach division of IPR for hosting it in a very nice and grand manner. Thank you all. Thank you, sir. We are glad to hear from you the words of wisdom and enthusiasm. India today needs more thinkers and researchers than it has ever needed. Science and technology are not only fast growing but are closely knit with our lives, and we need to inspire young minds to take up science and technology and become the scientists of future. Children of the school going age will have all the energy and creativity for learning and developing science. And this definitely is the right age to inculcate the spark of science and inquisitiveness in them, which would hopefully lead them to become the future scientist. As India celebrates 75 years of independence, the Azadi Ka Amrit Mahotsav, IPR, is proud to launch a comic book series entitled The Wonderful World of Plasmas, through which we hope to take the world of plasma to children. The first issue of this series, States of Matter, is ready to release in 14 Indian languages. The concept, story, and the script of the book is the brainchild of Dr. A.V. Ravikumar, a scientist and a science communicator at IPR. Since the targeted audience are children, who can be better than a young and dynamic artist? We have with us a dynamic artist, Master Ansh Trivedi, who is a 12th standard student of Eklavya School, Ahmedabad, who has put together a visual treat that introduces the concept of different states of matter as well as plasma to everyone interested in knowing about plasma. A very talented artist, Ansh, aspires to pursue a career in designing. We are thankful and we congratulate him for his wonderful work and wish him the very best. I request our director IPR, Dr. Shashank Chaturvedi, to officially release the comic book, The World of Plasma. I also request our Dean R&D and Dean Administration to unveil the print version of the comic in various languages.
Thank you very much. I would now request Dr. A.V. Ravikumar to share his journey in the making of this comic. Hi, Hans. Thank you for being here on this day, and also to his parents, Ujjan and Didi. And this idea of a comic actually it evolved over the years. The original idea was for a small movie series, 3-minute movies, but we found that making movies is not that easy. So we thought, why not convert the scripts into a comic series? But then it was not still very easy, because to find an artist who could do this for us was extremely difficult. It was only by chance that I could find artist Ansh through a common friend who was his uncle. And I'm so happy that within a short span of time of about 3 months, he was able to understand the concepts that was written in the script and convert it into the comic book. I must also thank his parents for actually allowing him to spare his time. By the way, he's in the 12th standard. To spare his time to do this fantastic work. And over and above that, the commitment that he had, he didn't have to do it, but he still took up the challenge and did those drawings. I'm so happy that he did it. And after that, after we did it in English, I was thinking, why not do it in other languages also? And for this, our IPR staff contributed to the big way, and we have it now in 14 languages. Hopefully, in the coming days, we will be able to translate it into more vernacular languages also, depending on whom we can find to translate them. So the journey was good. I really enjoyed doing this work with Ansh, and I hope you'll be able to do a few more before you move on in life. Thank you very much. Thank you, Dr. Ravikumar. Now that we have heard such good words for Ansh, I request our young artist Ansh to share his feelings and views on the comic. Good afternoon, everybody. My name is Ansh Trivedi, and first of all, I would like to thank IPR for giving me this opportunity. And it was my first time making a comic or anything such creative work at such a high level, and I really love that I got the opportunity to do such a thing. So the process was quite simple, and we actually started from scratch with the script, and we made rough sketches, and then we moved on to digital art, which again was the first time I did digital art. And yeah, so then after that we arranged the frames and we made it into a comic, and I like the end result that we got. So I'd really like to thank Ravi sir, because with the sheer experience he has and the creativity he has, I think it shaped the comic in a completely new and a really creative way. And it would have been completely different without all the inputs and advice that I got from his side. We also tend to share interest in photography and videography, which I think I mean, it created a link between us, and that's how, I got to learn a lot from him. I would also like to thank my parents because they helped me throughout my journey, and yeah, they also provided me with the materials I required, and they also allowed me to pursue this, um, even though I had my board exams going on, and that's why I think it took a bit more time, but I find the journey to be quite eventful. Yeah, and one thing I'd like to share was that I actually made my father, stand in different poses, and I took his photos, and that's how we got some rough sketches for the comic itself.
So yeah, I'd like to thank all of you who helped me through this, and once again, I'd like to thank IPR for this opportunity, and I hope you guys enjoy the comic. Thank you, Ansh, and we would also like to thank the enthusiastic parents. We wish you all the best for your future, and we hope you will continue in collaborating with IPR to take this comic series further. All of you can access this comic series on our outreach website, and I request all of you to give as much as publicity as possible. Go and spread the words among your friends and family, and you are also requested to translate it in any language you want. And now it is the most awaited time. It is a time for the results. We will shortly arrange a presentation where all the results will be declared, and I'll also announce the names of the prize winners. This time we also have top 3 schools which have performed the best in almost all the National Science Day competitions. And out of the three, two of the schools are the one that have topped last year also. So we congratulate them as well. And now I'll be announcing the results. So let us start the prize distribution. So for science model in the students category, rural schools, the third prize goes to Ayushi Patel and Janshi Goswami from Shri J.M. Chaudhary Sarvajanik Vidyalay, Mehsana. The second prize goes to Dhruv Parmar and Ayush Parmar, Shri S.L. Patel School, Bhat, Gandhinagar. And the first prize goes to Khushi Pedhadia, Ratania Primary School, Rajkot. Science model in the students category, urban schools. The third prize goes to Arnav Bopche and Akshat Singh from Podar School, Chandkheda, Ahmedabad. The second prize goes to Dhwani Sharma, Anand Niketan, Maninagar, Ahmedabad. And the first prize goes to Avni Sojitra and Trisha Selarka, Shri K.K. Dholakia School, Rajkot. Science model for the teachers. The third prize goes to Bhavna Ahuja, Anand Niketan, Maninagar, Ahmedabad. Second prize goes to Aditya Kavallinikar, New Era Senior Secondary School, Vadodara. And the first prize goes to Avinash Jaiswal, Airport School, Ahmedabad. Now it is a time for poster results. Poster winners in Hindi. Third goes to Agrima Gupta, Anand Niketan, Maninagar. Second prize goes to Vaibhavi Sharma, Podar International School, Ahmedabad. And the first goes to Siddhi Kulkarni, New Era Senior Secondary School, Vadodara. For poster English, the third prize goes to Goswami Sargam. Second prize goes to Sanskruti Gandhi, Amity School, Bharuch. And the first prize goes to Bhavya Porwal, Maharaja Agrasen Vidyalay, Ahmedabad. Poster in language Gujarati, the third prize goes to Janya Vij, Delhi Public School, Gandhinagar. The second prize goes to Priyanshi Jogani, New Era Senior Secondary School, Vadodara. And the first prize goes to Umrania Tisha, Srimati Khimji Ramdas Kanya Vidyalay, Kutch, Mandvi. Now it is a time for essay competition. Essay in the Hindi language, the third prize goes to Neev Dalal, Anand Niketan, Maninagar. Second prize, Srushti Chosalia, Matrushri LG Dholakia School, Rajkot. And the first prize goes to Bharwani Hirwa, Srimati KK Dholakia School, Rajkot. In the language English, the third prize for the essay competition goes to Kashvi De, Amrita Vidyalayam, Ahmedabad. Second prize goes to Jia Amitbhai Patel, Shri Saraswati English Medium, Modasa. And the first prize goes to Mona Lisa Das, New Era Senior Secondary School, Vadodara.
In the language Gujarati, the essay competition winners are: third prize goes to Rajput Kavya Jaisingh, Srimati S.C. Salvi and M.S. Salvi Primary School, Palanpur. Second goes to Prince Gadhia, Ultravision, Surendranagar. And the first prize goes to Solanki Darshan, Shri R.A. Patel Boys School, Vadwan. The winners of the quiz competition: the third prize goes to Amo Bharmekar, New Era Senior Secondary School, Vadodara. Second prize goes to Nitanshu Solanki, Kalapi Vidya Mandir, Lathi. And the first prize goes to Tarishi Parmar, Delhi Public School, Gandhinagar. For the skit, the third prize goes to Shri Saraswati Vidya Mandir, Amreli. The second prize goes to Shri G.K. Dholakia School, Rajkot. And the first prize goes to Podar International School, Ahmedabad. Now it is the time for eloquence winners. In Hindi, the third prize goes to Dishita Vasani, Shri Saraswati Vidya Mandir, Amreli. Second prize goes to Komal Buch, MET School, Bharuch. And the first prize goes to Kashvi Srivastav, New Era Senior Secondary School, Vadodara. For language English, the third prize for eloquence competition goes to Nirja Patel, Udgam School for Children, Ahmedabad. Second prize goes to Tejas Dwivedi, Kendriya Vidyalaya 4, ONGC, Vadodara. And the first prize goes to Vishwa Ambalia, Delhi Public School, Gandhinagar. For language Gujarati, the eloquence competition results are: the third prize goes to Rahi Patel, Podar International School, Ahmedabad. Second prize goes to Krisha Jogi, Shri G.K. Dholakia High School, Rajkot. And the first prize goes to Manasvi Parmar, J.M. Chaudhary Sarvajanik Vidyalay, Mehsana. I wish many congratulations to all the winners, and we really miss the clap and enthusiasm that we used to get during our live competitions. And now it is a time for the school to get the prizes. So from overall all the competitions, we have selected the top 3 schools. The third place at 25 points goes to Delhi Public School, Gandhinagar. The second prize with 27 points, marginal high, Podar International School, Ahmedabad. And the first prize goes to New Era Senior Secondary School, Vadodara, with 49 points. Hearty congratulations to all the schools, participants, teachers, and parents. And now we come to the conclusion of the ceremony. I take the opportunity to welcome Ms. Chaya Chawda to propose the vote of thanks. Thank you, Hiral. Good afternoon to everyone. At the end of week-long celebration of NSD at IPR, I take the opportunity to congratulate all the participants, winners, and winners of the competition. The success of any event lies in many hands that come together. I thank Director IPR Dr. Shashank Chaturvedi for his constant support and guidance to make this event successful. Next, I take the opportunity to thank our Dean IPR, Mr. P.K. Atre and Dr. S. Mukherjee for their valuable contribution in the celebration of NSD. I also thank the backbone of the event, the IPR Outreach Department of IPR, who is dedicated towards the popularization of science. I thank Dr. A.V. Ravikumar for his insightful vision. I thank Mr. Narendra, coordinator of NSD 2022. I also thank my colleagues, Harsha, Mohandas, and Gattu, for their hard work and dedication. I also thank the coordinators and volunteers of various competitions like Gattu for quiz and Dipti, Pramila, and Bhargav. Saroj and his team, Saroj, Shravan, Smita, Shilpa for posters and essay. I also thank Manoj, Ellen Shrikant, Sandhya, and Pratibha Gupta for elocution, and Harsha also. And Chetan Jariwala for science model for schools. Dharmendra Rathi for science model for teachers. And their team also like Rushank, Narendra, Chanmanjay, Etal, all others. I cannot thank enough if I have not thank IT department of IPR.
They have always helped us in for all the arrangements and for the virtual event. This event will not be possible without the overwhelming participation and support of school students, teachers, and parents. I thank you from the bottom of my heart for being a part of this event. Thank you so much. Can you start feedback? Fine. So here we come to the end of the concluding session and giving the results. Now we would like to listen from you all as a feedback for the betterment of the program. So one by one, you can please share your feelings, give a feedback, raise the hand. So the session is open for discussion. We would be very happy to have Hello. the feedback from you all. Hello. Yes, Avinash, you can speak. Yes. So congratulations to each and everyone who has participated, and also to the students who has won the prize, and also the schools which has performed very well. And I'm really happy to see that though in this difficult situation, the IPR is still doing online programs like this. I hope the next year we are going to have a very good situation so that we can have the same program in the offline mode. So it will be very much uh, convenient for all of us to see a live things instead of having virtual. So once again, I'm really thankful to the IPR and the students and the parents and the teachers who has contributed their efforts to make the students participate. Thank you all. Um, uh, Hello, good afternoon, everybody. Hello, good afternoon, everybody. This is Aditya Kaulanagar from New Era Senior Secondary School. And first of all, I would like to thank IPR for giving us this big opportunity to the teachers as well as to the students. And I also like to give a special thanks to Narendra sir, who always be very quick responding whenever we used to send any kind of a query and all. So he used to respond very quickly, and the entire team of IPR NSD celebration. Mohandas sir is also there, and we definitely miss that offline, and we can say the actual moment of the IPR where our student used to come. They used to take a tour of IPR and all, and we wish that very strongly that the next year we will definitely have the NSD offline. And finally, again, I would like to thank and I would like to congratulate all the participants. I would like to congratulate all the winners, and the same thing is to the entire team of the IPR. Thanks a lot, very, very much. We would like to have some critical comments, some feedback from you all, which we can improvise next year. So any students, parents, teachers? Good afternoon. Can you listen? Yes, you are. Yes, Yes, you ma'am, are you are audible. audible. हाँ, मैं पोदा इंटरनेशनल स्कूल की टीचर डॉक्टर दीपा सिंह हूँ और मैं पिछले 3-4 साल से आईपीआर में आ रही हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग जो बच्चों को ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को वहां पर प्रस्तुत कर सके। और आपको पता है ये चीज आपको पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, बट मैं बच्चों में देखती हूँ कि वहां जब वो प्रस्तुत करके आते हैं अपने प्रोग्राम या किसी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करके आते हैं तो उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस जागता है वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। एज ए टीचर मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को देते हैं कि साइंस के क्षेत्र में ही नहीं, आप ड्राइंग के क्षेत्र में भी देते हैं, उनको निबंध या लिखने के क्षेत्र में देते हैं, भाषण प्रतियोगिता में शामिल करके देते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं और साथ के साथ हिंदी इंग्लिश स्किट में जिस हमारे 6-7 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े लेवल पर आप बच्चों को एक स्थान देते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को
निखार सके। इसके लिए मैं आईपीआर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बच्चों को वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे जाकर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके जैसे टीचर्स होते हैं तभी बच्चे आगे आ पाते हैं। और कोई अगर चाहे तो प्लीज़ बोल सकता है, कोई क्रिटिकल कमेंट्स, कोई फीडबैक देना चाहे। नितांशु सोलंकी कह रहे हैं कि हमें कॉमिक बुक कहाँ से मिलेगा। आप ऑनलाइन हमारा आईपीआर वेब पेज पे आउटरीच डिवीजन पे जा सकते हैं। आपको अभी मैसेज में एक लिंक भी मिल रहा है, आप उधर क्लिक करके किसी भी भाषा में वो कॉमिक पढ़ सकते हैं। और कोई जो अपनी फीलिंग बताना चाहता हो। हेलो हेलो राजू दवे जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। यस मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हर साल अपने स्कूल में जो वक्तृत्व स्पर्धा होती है उसमें मैं भाग लेता हूँ। और थोड़ी सी मेरी जो होती है ना, कम मेहनत करता हूँ तो 50 रह जाती है, उसके उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर मुझे एक भी बार नंबर रैंक नहीं आया, फिर भी मैं हार नहीं माना। तो मैं मेरे जो भाई बहन है जो अभी यहाँ मीटिंग में ज्वाइन है, तो उसे मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप मेहनत करना मत छोड़ना। मैं हर साल रहता हूँ, फिर भी मुझे रैंक नहीं आता, फिर भी मैं निराश नहीं होता। हाँ, थोड़ा टाइम होता है पर मैं उसे सहन कर लेता हूँ और उसे भुला कर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं सारे भाई बहन को कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत अच्छी बात राजू आपने कही है। और रैंक नहीं आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से कम है, बस शायद थोड़े से कोई आपसे ऊपर चला गया है, लेकिन वो सिर्फ एक बार के लिए है। तो आप बार बार मेहनत करते रहिए, यहाँ नहीं तो कहीं और, लेकिन आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। કોઈ ગુજરાતીમાં પણ કહેવા માંગતું હોય, કોઈ કોમેન્ટ તો કહી શકે છે। ભાષાની કોઈ બાધ્ય નથી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, મલયાલમ, તેલુગુ, આટલી ભાષા તો અહીંયા સમજી શકે એવા છે। यस मैडम। હા, નસરુદ્દીન ભાઈ। હું એમ કહેવા માંગુ છું, વર્ષથી આવું છું આઈપીઆર માં। અમે તો આંગળી પકડીને બાળકોને લઈ આવેલી છે, ગામડાના બાળકોને, પણ પ્લેટફોર્મ આઈપીઆર તરફથી બહુ સારામાં સારું મળે છે અને બાળકોને પણ સારું જાણવા મળે છે અને બાળકોની મેં જોયું અહીંથી જે કઈ લોકો આવ્યા છે એ લોકો સારી કોશિશ કરે છે અને એ લોકોને સારું મળી રહ્યું છે। તો આઈપીઆર નો ખૂબ ખૂબ આભારી છું। થેન્ક યુ નસરુદ્દીન ભાઈ, આ તમે બહુ સારું કામ કરો છો ગામડાના બાળકોને અહીં સુધી લાવવાનું। આમને આમ એમને પ્રેરતા રહો તો એ અમને પણ સહાય કરશે। ઓકે મેડમ। Any more comments? I think that is the end of the session. इसके बाद भी अगर आप में से किसी को कुछ भी कहना है तो आउटरीच डिवीजन में आप ईमेल कर ही सकते हैं, आईपीआर से बात कर सकते हैं और हम आगे इसी तरह से काम करते रहेंगे इसी आशा के साथ। थैंक यू वेरी मच।